Hello everyone, welcome to iExamB. Based on the request and last year's success of the important questions for RBI Grade B, we are starting this series. First begin with this mantra, exam hai to iExamB hai. Subscribe to the channel and also press the bell icon so that you are getting important notification without any delay. The first question, which of the following statement is or are correct about the RBI monetary policy review of the August 2019? Repo rate has been decreased by 35 bps to 4.4%. Statement A, monetary policy stance is changed from neutral to accommodative. B, CRR is reduced to 4% from 4.25% earlier. Statement C and statement D is for consumer credit risk weight is reduced to 100% from 125%. If you have gone through the monetary policy statement and if it is not a condition, you have to go through. If you are preparing for RBI exam, you have to know this question very, very well. I am coming to the correct answer. Only statement D is correct because repo rate is decreased by 35 bps. Normally it is decreased by 25 or increased by 25 bps, but this time governor said it. We can break the tradition. So 35 bps cut, but after the cut, the rate is 5.4%, not 4.4. And the stance was accommodative earlier also. There is no change in CRR, so only statement D is correct, and this is the summary of the monetary policy review available in our course. And if you read these lines carefully, every number you will find here the stance of the monetary policy, which is accommodative, and also the risk weight, which is reduced to 100% from 125% to promote consumer credit. Question number 2. RBI monetary policy press release mentions retail inflation edged up to 3.2% in June from 3% in April-May, driven by food inflation, even as the fuel inflation and CPI inflation excluding food and fuel moderated. The question here is the retail inflation, which is CPI, is measured. You have these 5 options. How the retail inflation is measured? Month over month, quarter over quarter, year over year, or it is against a base year of this. I think जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, you have to be very, very careful that you need to understand what you are reading. Retail inflation is measured by CPI. And this is what RBI takes into consideration. अगर आप कोई पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें WPI लिखा हुआ मिलेगा आपको. पहले RBI WPI को अकाउंट में लेता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, बट अभी CPI होता है. लेकिन CPI को मेजर कैसे किया जाता है? In this statement itself, so this I have copied from the press release of RBI. It is mentioned here YOY, year on year. Inflation means increase in the price level, which is measured year on year. चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय, which is the organization which operates this. And by the way, I hope you know what is check truncation system. आज के टाइम में होता क्या है कि चेक बैंक से दूसरे बैंक ट्रेवल नहीं करता है, बट द इमेज ऑफ द चेक विच इज स्कैन्ड इन द ब्रांच इटसेल्फ वेयर द चेक इज प्रेजेंटेड, वो इमेज जाती है बैकएंड पे, प्रोसेसिंग सेंटर पे. उस इमेज के बेसिस पे पेमेंट हो जाती है, बिकॉज द पासिंग बैंक कैन सी द अमाउंट एंड सिग्नेचर विच मेक चेक सेटलमेंट फास्टर. तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है? द करेक्ट आंसर इज एनपीसीआई. एनपीसीआई के और क्या क्या काम है आपको पता होना चाहिए. दिस इज एन आरबीआई ओन इंस्टीट्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. आरबीआई अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम. आई थिंक इन दिस टुडेज 10 क्वेश्चन दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. अगर आपको ये भी मालूम नहीं है तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये पॉइंट न्यूज में था. गवर्नमेंट इज आस्किंग आरबीआई टू चेंज द अकाउंटिंग ईयर टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग ईयर विच इज फॉलोड इन इंडिया. इंडिया में क्या अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है? अप्रैल टू मार्च, बट आरबीआई फॉलो करता है जुलाई टू जून. आरबीआई की क्लोजिंग जून में होती है, क्योंकि आरबीआई का पॉइंट है जब सारे बैंक क्लोजिंग कर लेते हैं उसके बाद आरबीआई को 3 महीना और चाहिए, 1 क्वार्टर, टू क्लोज इट्स अकाउंट. और अगर आप आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे उसमें हमेशा ये जून का डेटा प्रेजेंट किया जाता है, जुलाई 1 टू जून 30th. दिस इज द समरी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट available on the iExamB, and you have to remember these most significant aspect, and especially because government has been asking RBI to align the accounting year to the same April March.
आज के टाइम में when there is faster data, when there is computerization, it can be done. Let's wait what RBI does with that. हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following statement is correct about housing loan limit for PSL eligibility for RRBs and स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें अदर कॉमर्शियल बैंक से, क्या ये शेड्यूल्ड बैंक है? ऑल दिस थिंग यू शैल नो. You have three statements here. This limit has been increased from 30 lakh to 40 lakh in metro cities, metropolises more than 10 lakh of population, and this is increased from 28 lakh to 35 lakh in metro centers, and this is increased from 20 lakh to 25 lakh in the other center. You know your answer, mark your answer. I am going to the correct option here. Correct option is B and C. पहला वाला गलत है, ये increase किया है 35 lakh from 28 lakh for metro center and for other centers up to 25 lakh. This is also in news. आप देख सकते हैं ये मेक यू न्यूज है. लास्ट ईयर पहले ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो अदर कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए चेंज किया था और इस साल ये आरआरबीज के लिए चेंज किया है. तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेवलपमेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और इसके साथ में ये भी कंडीशन है कि व्हेन यू आर सैंक्शनिंग दिस हाउसिंग लोन अप टू 35 लाख रुपीज इन बिगर सेंटर, मेट्रो सेंटर, द कॉस्ट ऑफ द हाउस shall not exceed 45 lakh and in other centers shall not exceed 30 lakh. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा नहीं है कि आपने 2 करोड़ का घर बनाया उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालेंगे अगर उसमें लोन 30 लाख का ही है. सो मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल इज 35 lakh in metro, 25 in other centers and the maximum cost of the dwelling unit is 45 lakh and 30 lakh. दोनों चीज याद रखिए. लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कीम से काफी सारे प्रश्न आए थे. तो चलिए एक गवर्नमेंट स्कीम को यहाँ टच करते हैं. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, इज एम्ड एट. यू हैव 5 ऑप्शंस. आप पढ़िए बिकॉज हम टाइम बचाने के लिए आगे चलते हैं. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इफ यू क्विकली नो द आंसर, मार्क इट. द करेक्ट आंसर इज दिस इज फॉर ensuring reasonable prices for the crop for effective implementation of the MSP. MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और ये इंपोर्टेंट क्रॉप का आपको याद भी होना चाहिए. से व्हीट, पैडी, इनका एमएसपी क्या है? दिस कैन बी ऑल्सो एन एग्जाम क्वेश्चन. ये देखिए हमने अपने नोट्स में किस तरीके से ये कवर किया हुआ है. पीएम आशा इज एन अम्ब्रेला स्कीम to ensure reasonable prices for crops for effective implementation of the MSP. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड अगेन अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो शायद कई जगह ये 1% लिखा होगा कि बैंक्स कैन बोरो अप टू 1% ऑफ द एनडीटीएल लिखा होगा बुक में, लेकिन ये अभी 2% है. एंड आई डू नॉट नो वेदर दिस कैन कम ऑल्सो इन एग्जाम की 1% है या 2% है, बट हियर आई वांट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट की रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या है, एमएसएस क्या है. सो बैंक कैन बोरो अप टू 2% ऑफ एनडीटीएल फ्रॉम आरबीआई अंडर विच ऑफ द फैसिलिटी. किस सुविधा के तहत बैंक बोरो कर सकते हैं आरबीआई से. एंड दिस इज एक्चुअली डन बाय कीपिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज with RBI. The correct answer to this is marginal standing facility. ये LAF liquidity adjustment facility के अंदर एक नई फैसिलिटी दी RBI ने 2011 में. And bank can borrow overnight from RBI against the government approved security. मतलब government approved security एक तरीके से collateral रहती है. So next, which of the following statement is correct about inflation? Inflation is again very important topic for RBI exam because RBI is mandated price stability. Inflation management करना है ना RBI को. 4% plus minus 2 ये तो पढ़ रहे होंगे आप बार बार, मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कशंस में आता है. तो कमिंग टू हियर, कौन सा इसमें सही है? हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स इन्फ्लेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी प्राइसेस. कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स इन्फ्लेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी प्राइसेस. हेडलाइन इन्फ्लेशन इज नॉर्मली हायर देन कोर इन्फ्लेशन. सीपीआई मेजर्स हेडलाइन इन्फ्लेशन. तो ये दोनों कोर इन्फ्लेशन क्या होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होते हैं, ये तो आपने पक्का पढ़ ही लिए होंगे. आई डोंट थिंक कि आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि बी सही है, बिकॉज हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स बोथ फूड एंड फ्यूल. फूड एंड फ्यूल का जो प्राइस होते हैं बहुत वोलेटाइल होते हैं, इसलिए कोर इन्फ्लेशन में उनको काउंट नहीं करते हैं. बट ऑप्शन सी में आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इज नॉर्मली हायर देन कोर इन्फ्लेशन और वाइस वर्सा? कुछ नहीं होता है ऐसा. इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस चेंज इन दीज आइटम्स व्हिच आर देयर इन हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन. So this is also not useful. Statement D, CPI measures headline inflation is also correct. Please remember this for the exam. Coming to the next question, call money market refers to the borrowing and lending for. हम बार बार बात करते हैं कॉल मनी मार्केट, रोज लगभग अखबार में आता है इसके बारे में.
What is call money market? You have to remember the exact definition of it. So call money is when it is overnight, one day, और उसके ऊपर जो है 2 to 14 days is notice money, and more than 14 days is called term money market. When we use the word money market, so we have to remember these sub classification under the money market. Now one question is for you. You have to answer this question. In July 2019, which international organization approved USD 6 billion loan for a period of 3 years for कैश स्ट्रेप्ड पाकिस्तान? कौन सी संस्था ने पाकिस्तान को 6 बिलियन यूएसडी का लोन दिया है? वेरी मच कवर्ड इन द मीडिया. राइट योर आंसर इन द कमेंट बिलो. आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, and I hope there is no confusion which is the international institution which helps in case of the balance of payment issues. When you are preparing some of the concepts you may be finding difficult, don't worry, stay with the problem longer, you will understand, you will solve it. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, please subscribe to the channel and press the bell icon. And for such more questions, attempt mock test at iexambi.com. All mock tests are free.